The databases or database user. Yesterday we covered the main topic, outline, course outline. So I don't think we need to do it again. Um, in this chapter, basically, we will be talking about databases, what are the types of databases, database applications, DBS functionality, characteristic of database approach, database users. So all these topics we will be covering. अब database के आपके ज़हन में जो एक typical database का यूज नजर आता है वो तो यही है कि information store किया जाए. For example, if you are running a business, sales, you have a shop and you are selling products, then there will be information about products, there will be information about users, information about sales, कि किसने क्या चीज बाय की, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है. लेकिन बियॉन्ड दैट यानी न्यूमेरिकल और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेसेस के अंदर रहती है, जो बिजनेस एप्लीकेशंस हैं. तो किसी भी मेट्रो की एग्जांपल आप ले लें या अल्फता की ले लें या किसी भी स्टोर की ले लें जिन्होंने अपने वहाँ पॉइंट ऑफ द सेल सिस्टम रखे हुए हैं, जहाँ आइटम स्कैन होता है और फिर आपको वो रिसीट निकल के आपको मिल जाती है. सो दे आर यूजिंग डेटाबेसेस बिहाइंड द सीन, और उसमें एक न्यूमेरिकल डाटा भी है, टेक्सचुअल डाटा भी है. लेकिन इस चीज़ों के अलावा भी डेटाबेसेस की बेशुमार जो है वो यूजेज है. आप मल्टीमीडिया डेटाबेसेस हैं जिनका काम इमेजेस और वीडियोस और इसको साउंड को स्टोर करना है. अब देखिए YouTube है. अब YouTube भी बैक एंड पे अपने डाटा को किस तरह सर्च फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ उसने किस तरह स्टोर किया हुआ है. आप दराज.pk पे चीज़ें खरीदते हैं, अब उन्होंने वहाँ पे किया हुआ है. सो इसकी बियॉन्ड the textual and numerical data, we have geographic information system जिसमें जियो लोकेशंस होती हैं. जो मसलन आपने सर्च किया कि लाहौर के अंदर मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे अच्छा खाना मिलता हो, लेट्स से, so then that may have geographical information, जियो कोड्स हों, और उन जियो कोड्स को यूज करते हुए गूगल मैप्स टाइप चीजें जो हैं. फिर डाटा वेयर हाउसेज होते हैं जिनमें यूज होता है. फिर रियल टाइम और एक्टिव डेटाबेसेस होती हैं वर्सेस पैसिव डेटाबेसेस भी होती हैं. एक्टिव डेटाबेस में फॉर इंस्टेंस ये होगा कि लेट्स से आप स्टोर पे खरीदने जाते हैं, तो जैसे ही आपने चीज बाय की उसी वक्त बैक एंड सर्वर्स पे डाटा आपका अपडेट हो गया. सो दैट इज अ रियल टाइम transaction happening. In some cases, or it used to be a while ago, क्या होता था कि सारा दिन वो ट्रांजैक्शन इकट्ठी करते रहते थे लोकल स्प्रेडशीट में या लोकल कॉपी, डेस्कटॉप पे कॉपी, एंड देन they would integrate it into the database later that day, that night, or maybe after a week. So that would be transactional updates. तो इसमें जो हमारा फोकस है वो बेसिकली तो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन पे ही है, जो न्यूमेरिकल और टेक्सचुअल डाटा यूज होता है जिसमें, उन पे ही हमारा फोकस ज्यादा उसी पे रहेगा. अब डेटाबेस डाटा क्या,
ڈیٹا ورسز انفارمیشن آپ نے پڑھا ہوگا، یہ تو بڑا ایک کامن ٹاپک ہے آئی ٹی میں. جی ڈیٹا ورسز انفارمیشن، کیا ڈیٹا کی اور انفارمیشن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سر ڈیٹا ہوتا ہے کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرس. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اور انفارمیشن پروسیس ڈیٹا ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو آپ کا جو را ڈیٹا ہے، را جو چیز ہے وہ ڈیٹا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز. جب اس کو ہم پروسیس کریں گے تو وہ انفارمیشن بن جائیں گی. آپ ایگزامپل لیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے، کسی دیوار پہ یا کسی پیپر پہ لکھا ہوا ہے 1 2 R 5 6. اب وہ ایک ڈیٹا ہے، اس کو آپ سٹور کرنے ہیں ڈیٹا بیس میں، لیکن ایز سچ وہ آپ کو کوئی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر رہا کہ وہ بس ڈیٹا ہے، آپ نے ڈیٹا وہ کر دیا. اب انفارمیشن اس وقت بنے گی جب آپ کو اس کے ساتھ بتاؤ کہ بھائی یہ 1 2 R 3 5 جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی نمبر ہے کہیں پہ کسی کالج میں. دین اٹ بیکمز این انفارمیشن. وہ پروسیس آپ نے کیا، اس کو آپ نے پھر لیبل کیا، آپ کو پتا چلا کہ یہ تو انفارمیشن ہے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے. ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اندر یہی ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اب اس میں ڈیٹا بیس کے اندر آپ ہر چیز تو ریکارڈ نہیں کر سکتے، تو آپ کا ایک منی یونیورس ہوتا ہے، یعنی ایک